Good morning, students. Today we will learn about properties of soil. Before we go into properties of soil, let's see how soil is formed, right? Formation of soil. Raju, Rani and Chintu decide to make some diyas for Diwali. All of them sit together and start doing their work. Raju starts sieving the soil. Chintu starts making the dough of the soil. And Rani tries to make the diyas. While Raju is sieving the soil, he observes that there are small stones in it. He shows it to Rani and Chintu. They wonder how these stones came into the soil. So they go to Colonel Uncle to ask him about it. Colonel Uncle explains to them that long ago huge rocks were found on the earth. Due to the sun's heat, rain and wind, these rocks slowly broke down into small pieces. Over a period of time, these pieces of rocks became smaller and smaller and formed soil, which is the topmost layer of the earth. Thus, soil is formed by breaking down of rocks due to the action of sun, rain, and wind. This is called weathering of rocks. It takes many years to form soil. Also, when living things like plants and animals die on the earth, their remains get mixed with the soil. Also, we see different colored soil like brown, red, black, etc. in different places. This is because they are made from different rocks. Okay. Let's move forward. So now you know the soil is formed by big rocks which were broken into smaller and smaller pieces by sunlight and rain and wind. Yes? All right, let's move on. Let's now learn few properties of soil. So, what is soil? Soil is it's a mixture of mineral particles, organic matter, water, and air. So, soil इन सब चीजों का mixture होता है. Mineral particles. Mineral particles जैसे कि, for example, can you tell me an example of mineral? Think. Yeah, iron, copper, nickel, zinc, and so on. There are so many metals, so many minerals. So those are mineral particles. Then you talk about organic matter. What is organic matter? The compost that we were making in the class, remember? So all your food, leaves, so जो भी living things होती है, they are organic matter. Living things like plants and animals. So when plants and animals die, animals include human beings. So when plants and animals die, they become what? They become organic matter. Okay? They're called organic matter and they become compost. And water and air. So in this pie chart, you can see, look, 25% is air, 25% water, 45% is what? Mineral matter. And what is 5%? That's organic matter. Yeah. So quickly pause the video right now and write everything that you can see on the slide.
because this can be a question in the exam. What can be the question? What is soil? You see here, question, what is soil? What is soil made of? Draw a pie chart like this, explaining the constituents of soil. So these questions can come. I hope you have written it down. Let's move forward. Okay, so this is the first property of soil. So now we are doing properties of soil. Okay, so may write this heading in your notebook. Properties of soil. We will learn about two properties of soil today. The first property, after writing this heading, write first property, soil has color. So here you can see there are so many different colors that soil can have. You see this black, this nice red color, this is dull brownish color, this is whitish, a very dark brown, this is almost black. You see all these have different colors. So first question, why do soil has different color, and second, does it affect anything? क्या soil change हो जाता है जब उसका color change होता है? And different color है ही क्यों? Yeah, these questions come to your mind when I show you so many different types of color of soil. Okay, the color of the soil depends upon, let's see answer to these questions. So the color of the soil depends upon, जो soil का color है वो depend करता है उसके organic ingredient पे. Organic जैसे क्या बताया था? Living things which die and then are sent back to the ground. Living things, animals and plants. So उसके organic ingredient पे matter करता है, and types of minerals present in the soil. And दूसरा is जो minerals होते हैं soil में. So two things affect the color. ठीक है? Two things. Organic matter and second चीज क्या होती है? Minerals. So कोई भी soil है उसका color ये दो चीजों की वजह से change हो जाएगा. First is organic matter, second is minerals. So for example, presence iron can give red color and manganese oxide can give black color. So जो red color होता है soil का, that is because उस soil में iron है. So अगर मुझे कोई red color का soil दिखाएगा, so I can see that soil, I can tell them कि it has iron in it. Yeah, so I can mine iron वहां से. मैं वहां से लोखंड को निकाल सकता हूँ, मैं आयरन को निकाल सकता हूँ. देन अगर कोई मुझे ब्लैक कलर का सॉइल दिखाएगा, देन आई कैन नो कि उसमें मैंगनीज ऑक्साइड है. मैंगनीज ऑक्साइड इज अनदर व्हाट यू से मटेरियल, एंड जो मैंगनीज है दैट्स अ मेटल. सो यू सी दिस मैंगनीज, नॉट द सॉरी दिस मैंगनीज, this is a metal. So manganese oxide से manganese निकाल सकता हूँ, which I can sell in the market. Yes. So these are the two things due to which color of the soil is affected. Now ये तो color हो गया कि क्यों मेरा soil का different color है. ये तो इस question का answer हुआ ना कि why does soil have different color? So exam में they can ask you why soil has different color. They can ask you, right? So इसका आंसर क्या हुआ? Here soil has different color because it depends upon first and two, right? So make sure you're writing this down. You can pause the video and write it. Now second, because of the color क्या फर्क पड़ता है? Darker the soil, now look at this, this is very important. Darker the soil, the capacity of holding water is more and has more organic matter, so the fertility of the soil is also more. Oh, very important. So suppose मुझे पेड़ उगाना है या मुझे फार्मिंग करनी है, तो क्या मैं व्हाइट कलर का सॉइल लूंगी जो सैंड होता है बीच पे, कि मैं ब्लैक कलर का डार्क कलर का सॉइल लूंगी? कभी आपने बीच पे प्लांट्स को उगते हुए देखा है? हैव यू सीन बीच पे प्लांट्स उग रहे हैं जहाँ पे व्हाइट वाला सैंड होता है पानी के पास में? नेवर. पानी के पास में व्हाइट बीच होता है, वहां पे
ब्राउनिश होता है, लाइट कलर का होता है, वहां पे कभी मैंने प्लांट नहीं देखा है। दूर कहीं पे प्लांट होता है, बहुत अंदर की तरफ, है ना। बट अगर मेरे को फार्मिंग करनी है तो मैं कहीं से डार्क कलर का सॉइल लेके आऊंगी। क्यों? क्योंकि डार्क कलर का सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे जो प्लांट्स को चाहिए। और प्लांट्स को क्या चाहिए होता है खाना बनाने के लिए? दे नीड वाटर। सो जो मेरा सैंड है वो तो जल्दी से पानी छोड़ देता है, उसके अंदर पानी रहता ही नहीं है। बट जो मेरा डार्क कलर का सॉइल होता है, इट कैन होल्ड वाटर, वो पानी को होल्ड कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स। So I will find a darker color soil. Now you know, by looking at the soil you can tell me ki which soil is good for growing plants. Fertility ज़्यादा ना, तो अगर fertility मतलब कि can we grow plants or not. So this is a very important note. Make sure you're writing it down. Look, the color of the soil near land surface is darker than the color of the lower layers. This is also an important note to write. कि जो surface के पास में dark color है, नीचे light होता जाता है, and then last में तो we have rocks only. Yes. So pause the video and write this note also. Okay. So now we will move on to the second property. The second property is soil has texture. Different soil, जब हम उसको अपने हैंड में उठाएंगे एंड फिंगर्स के बीच में देखेंगे तो अलग फील होगा, उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा। व्हेन यू टच वुड एंड व्हेन यू टच क्लॉथ, क्या दोनों की सेम फीलिंग होती है? नो, इट्स डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट टेक्सचर। द सेम वे different soil has different texture. The soil which is used which is on beach is very sandy. Yes, it is very grainy. Uska texture is very thick. छोटे छोटे particles you can feel. But what about the soil in which you grow plants? Very smooth, very tiny. Yeah. So we have learned these two properties. Soil has color and soil has texture. Here you can see different colors of soil in this picture. And in this picture you can also see what metals they were made of. Okay, so here I have described different texture of soil. So this is sandy soil. Yeah, ये हमें कहाँ मिलता है? ये बीच पे मिलता है. It has large particles. So इसके particles बड़े हैं. अगर suppose इतने बड़े हैं इसके particles, तो जो medium soil है उसके particles इतने बड़े होंगे. और जो clay soil होता है उसके particles तो इतने से ही होंगे. समझा? ये इतने बड़े हैं, ये मीडियम है एंड ये सबसे छोटे हैं. इट इज इजी टू प्लॉ. प्लॉ क्या होता है? So, आपने देखा है फार्मिंग करने से पहले उसमें से बुल के यूज करके या फिर खुद यूज करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी ऐसे लाइंस होती है. तो ऐसे इसको यहाँ से पुल करते हैं तो ऐसे लाइंस क्रिएट हो जाती है. तो हम क्या कर रहे हैं? उसको प्लॉ कर रहे हैं. ये पेड़ लगाने से पहले हमें करना पड़ता है. सो जो सैंडी सॉइल है उसको प्लॉ करना इज वेरी इजी. जो सिल्ट सॉइल है, प्लॉइंग इज नॉट एज इजी एज इन सैंडी सॉइल. वहां पे प्लॉइंग इतना इजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल से इजीली हो जाता है. यहाँ पे छोटे पार्टिकल से तो इतना इजी नहीं होता है. प्लॉइंग इज वेरी डिफिकल्ट. क्ले में तो प्लॉ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज यू नो क्ले कैसा होता है, राइट? उस एक के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, दे होल्ड ऑन टू ईच अदर. The sandy soil, it is less fertile. This we have just discussed. Beach pe there are no plants, so it is less fertile. This is more fertile than sandy soil. ये sandy soil से ज़्यादा fertile है. What about clay? Clay is very fertile and it has more capacity of holding water and it can hold water also very very well. Yeah. So make sure you're writing this down in your notebook. You can pause the video and write it. This is very important. When they ask you about the texture of the soil, you have to write all this. So differentiate question would come like this. Differentiate between, sorry, not between, differentiate among.
differentiate among different texture of soil. Differentiate करो किसमें? Among different texture of soil. जो different texture है soil के उनके बीच में differentiate करो. So now you can do it very easily. You have to remember this table. I hope you have written it down. If not, please pause the video and write it. And let's move forward now. The colors and texture help farmers to know. So this is not, this is KNOW, गलती हो गया, यहाँ पे K नहीं है. To know. Know मतलब जानना. Color texture कैसे help करता है? The fertility of soil. कि soil कितना fertile है. This we have seen. Lighter color मतलब less fertility. Darker color मतलब more fertility. Water holding capacity. This also we have seen. Light color में it will not hold, but dark color will hold. What kind of crop should be grown? So this is very important. So you know different plants, there are different types of crops out there. Then there is coriander, there is wheat, there is corn, and so many, right? So do you think all different types of plants need same food? सारे plants को क्या same तरीके का food चाहिए होगा? जब आप थोड़े बीमार होते हो तो आपको अलग टाइप का खाना मिलता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग चीजें होती हैं. जो आपके ग्रीन लीव्स होते हैं या फिर कैरेट होता है या बीट रूट होता है, जब आपका ब्लड लॉस हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा कैरेट और बीट रूट पिलाते हैं क्योंकि उसमें अलग तरीके का मिनरल्स होता है. So all your food has different types of minerals and you need it for different things. We studied this last year कि इस फूड में ये विटामिन है, इस फूड में ये वाला विटामिन है, if you remember, इस फूड में ये मिनरल, इस फूड में ये मिनरल है. So उस फूड में वो मिनरल कैसे आया? सॉइल से आया. It takes food from the soil, right? So if I want to grow, suppose spinach, ठीक है, पालक अगर मुझे ग्रो करना है, then I need एक ऐसा soil जिसमें आयरन ज्यादा हो. तो I need dark reddish color का soil. That will be the best क्योंकि I know reddish color में मेरा आयरन ज्यादा होता है. Yes? बट अगर मुझे सपोज मैंगनीज ऐसा कोई क्रॉप है जिसमें मैंगनीज ज्यादा होता है वो ग्रो करना है, तो आई नो मेरे को ब्लैक कलर चाहिए बिकॉज ब्लैक कलर में मैंगनीज ज्यादा होता है ना. सो ऑलवेज रिमेम्बर. सो कौन सा क्रॉप ग्रो करना है वो भी मेरे को कलर और टेक्सचर से ही पता चलता है. ठीक है. नाउ दीज आर द 2 क्वेश्चंस. पॉज द वीडियो राइट नाउ and write answer to these 2 questions. First copy the question down and then write the answer. Now these are the remaining 3 questions. So for today you have 5 questions. First you have to think about these 2 questions. Question number 1, this is your question number 2. So write the 2 questions and write the answer. This is 3 more questions. 3, 4 and 5. Okay, so all the answers are already with you. I've explained everything. Now it is up to you to write all the answers. All right, all the best guys, and submit the homework before online class. Okay, today your online class is at 1.